Hello everyone, this is my first video of income tax, and in this video we will start with the chapter An Introduction to Income Tax. Now, as we are studying income tax, first of all we should know what is tax. A tax is a compulsory fee or financial charge levied by a government on an individual or an organization to raise revenue for public works. Tax क्या है? That is a compulsory fees, and it is a main source of income for the government. Now, there are different types of taxes implemented in the country, and all the various taxes in India can be broadly classified into two categories, that is direct tax and indirect tax. Now, what is direct tax? Direct tax is a tax that are directly paid to the government by the taxpayer. Direct taxes are imposed on income and profit. Example, income tax, corporate tax, wealth tax. Direct taxes are those taxes which are directly paid to the government, or you can say direct taxes are directly borne by the person on whom it is imposed out of his own pocket. Let's take an example. If any person running his business and earn an annual profit of ₹5 lakh, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसको पूरी ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट होता है, देन गवर्नमेंट विल चार्ज टैक्स ऑन हिज इनकम. मीन्स 5 लाख रुपीज जो प्रॉफिट हुआ है उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा एंड ही हैव टू पे टैक्स ऑन इट. सो दिस टैक्स इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स. व्हाई? एज इट इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed. Clear? Indirect tax. Indirect tax is levied on goods and services. Indirect tax हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है? Goods and services पर. और direct tax चार्ज होता है on person income. The indirect tax are collected by intermediaries from the persons who bears the ultimate economic burden of the tax. Or you can say indirect taxes are those taxes which are not paid directly to the government. It is imposed on one person but borne by the another person out of their pocket. Indirect taxes क्या होता है कि जिसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है from one person to another person. Let's take example. If any person sold goods to the customer, अगर कोई person कोई शॉपकीपर है और वो गुड्स सोल्ड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, then he will charge tax on it in the bill and collect it from the customer. So here the government made liable to the shopkeeper to pay tax. यहाँ पे government किसे tax charge करेगा, किस पर impose करेगा? शॉपकीपर पे. However, the shopkeeper shifted the burden by collecting it from the customer. लेकिन शॉपकीपर अपना burden किस पे शिफ्ट कर देता है? कस्टमर में, और कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करता है. तो दिस टैक्स इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स, एज कस्टमर इज पेइंग टैक्स but not directly to the government. See, direct tax is imposed on one person and borne by the same person, but indirect tax is imposed on one person and borne by the another person. Indirect tax do not depend on the income of an individual, and the tax rate is same for every person. Indirect tax में जो भी tax rate होता है वो सभी persons के लिए same होते हैं. And the Central Board of Indirect Taxes and Customs is mainly responsible for handling indirect taxes in India. Now, income tax. Income tax is a direct tax. Income tax कौन सा tax है? Direct tax, and it is imposed on income of the person. It is levied and collected by the central government, and it is very important source of income of the central government. Income tax department functions under the direct control and supervision of Central Board of Direct Taxes. CBDT means Central Board of Direct Taxes कंट्रोल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सुपरवाइज करता है. Income tax is a tax on income levied on the previous year total taxable income of the assessee. Means person की previous year की total income पे tax impose किया जाता है. That is called the income tax. The rates of income tax are given in the Finance Act passed by the Parliament every year. Now, a brief history of income tax in India.
In India, this tax was introduced for the first time in 1860 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained by the government on account of the military mutiny of 1857. सबसे पहले इंडिया में टैक्स इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने 1860 में. And then in 1886, a separate income tax act was passed. This act remained in force up to 1917. 1886 में एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था और वो 1917 तक फोर्स में रहा. और उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस मींस अमेंडमेंट्स होते रहे. बट फाइनली द इनकम टैक्स एक्ट 1961 has been brought into force with effect from 1st April 1962. Now, the important elements of income tax, or you can say the characteristics of income tax. Income tax is a direct tax. Why? Because income tax is imposed on one person and borne by the same person. जिस पर्सन पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है, उसी पर्सन को टैक्स पे करना होता है. मीन्स यहाँ पे जिस पर्सन पर टैक्स इम्पोज होता है और जो बर्डन बेयर करता है, बोथ आर सेम. एंड इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट. सेकेंड, इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन. इनकम टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है? पर्सन की इनकम पे. थर्ड, इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन. ईच एंड एवरी पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज ओन इनकम. अगर कोई भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, देन ही हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स इनकम. इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. किसी भी पर्सन की प्रीवियस ईयर की जितनी भी इनकम होती है उस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है. इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन द टोटल टैक्सेबल इनकम. टोटल टैक्सेबल इनकम मीन्स a income which has been received whether it is earned or not, calculated under various head. different heads हैं इनकम के, इनकम टैक्स में, और उसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद उसमें से डिडक्शंस माइनस किए जाते हैं एंड देन वी विल गेट द टैक्सेबल इनकम. और जो टैक्सेबल इनकम आती है उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, दैट इज इनकम टैक्स. लास्ट है, इनकम टैक्स इज लीव्ड एज पर स्लैब सिस्टम. Slab system means a system under which the total taxable income is divided into various income slabs. Slab system में हमने इनकम को डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग है, जिसको हम प्रोग्रेसिव रेट सिस्टम कहते हैं. तो इंडिया में हमारा जो इनकम टैक्स सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव रेट सिस्टम. इट मीन्स दैट हायर इनकम स्लैब्स हैव हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स. और जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती जाएगी, उसका टैक्स बर्डन इंक्रीज होता जाएगा. तो हायर इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन हायर इनकम. क्लियर? ओके, थैंक यू.